So let's start our discussion. I will just advise कि give me half an hour, 40 minutes. Let me explain everything. And then whatever your queries are there, you can ask. But बीच में 30-40 minutes, don't say anything. Because I know what do you want to know. What is your expectation from the meeting. And I will try to fulfill your expectation in the coming 30 to 40 minutes. First of all, thank you for joining this webinar and meeting, giving your precious time in this busy schedule on Saturday, weekend, maybe not office, but you want to enjoy, but still you are giving time to your growth and all that. So thank you for that. But now this will be fruitful when you give me 30-40 minutes to make you understand everything relating to CIMA. Now, if I will say that if anybody is there in the meeting, what is the purpose of attending this meeting? The purpose are 3-4 things. The first thing, I want growth in my career. Whether by doing CIMA, I will be getting that desired growth. Whether CIMA will help me to bring that knowledge inside me, which I can utilize for my balanced life. Whether CIMA is applicable as a working professional, whether I will be able to do. Whether CIMA is applicable for not a working professional, but a normally 10 pass out, 12 pass out, undergraduate or pure graduate student not started working. What are the opportunities I will be getting by doing CIMA? Second, what are the exams to be given? What are the paper structure? What will be the cost? What will be the duration? And third, how a learning partner like Saraf Academy will be able to help you in achieving your dreams in doing CIMA. Okay, these are the three things according to me is in everybody's mind. And I want to clarify all these three things in coming 30-40 minutes. No chat required in the chat box. Once my saying is over, I will be asking from all of you. You can unmute yourself and you can ask your questions. Whatever in between questions are coming in your mind, you can just write it down and later on you can ask by unmuting yourself. थोड़ा सा मेरे को 30-40 minutes दीजिए, आपका सारा doubt clear हो जाएगा. I am personally teaching CIMA since 2009. I taught from one student in 2009, the first student in CIMA. And actually that student came from UK to take classes in Kolkata. He came by far from UK. He stayed in Kolkata. He took the classes and he flied away to UK again. Understand? This is my journey started for teaching CIMA in 2009. And now this is 24 is getting over. So it's a very enriching and very, I will say, competitive and at the same time, very satisfied journey. Because from one student in 2009, I am presently teaching approximately 150 students in CIMA. And I have already taught more than 10,000 students in CIMA. And most of my students, those who have given exams, they have already passed the CIMA qualification. What is the meaning of saying this? That means I personally feel I am one of the best, one of the good tuition provider or guider to help the student to pass CIMA qualification. That is my understanding. Maybe those who have taken classes from me, there are so many videos on YouTube by individual students who are saying about me. I'm not praising myself, but CIMA actually runs in my blood. That's actually the qualification. Out of all the international courses which I am teaching, I am already CIMA qualified. I am already CIMA Institute member. So you understand that what is the value I give to CIMA qualification. Now, what I learned personally by doing CIMA, मेरे को क्या समझ में आया? By doing CIMA, I am able to manage my business in much better way. Doing the marketing of my courses, developing the products, pricing of the products, then doing a competitive analysis on the basis of other. When I started teaching CIMA in 2011, 12, 13, there were so many learning partners in India offering CIMA qualification. Out of that now, 90% are not there. They were not able to sustain in front of me. That means I learned how to manage business by doing CIMA. CIMA started the case study classes, case study oriented syllabus in 2015, which is they are running still. And it's a fantastic way of teaching because
Suppose you are studying something technical in your books, accounting, finance. The technical part are not relevant in the practical life. In practical life, you need to solve business problems. Those business problems are relating with HR, marketing, product differentiation, product marketing, targeting a new market, financial fundraising, whether you should be doing a project or not, whether if you are facing some problem from a supplier, from a customer, how can you tackle them? What are the different types of risk a business is facing? How can you handle those risks? How can you manage those risks? This cannot be done by a normal person. This can be done only by a very, very sound, practical oriented, knowledgeable person. I am managing my business better way by doing CIMA. If you are working somewhere, you want to work somewhere, you need to manage the business of the other organization. You need to solve any type of problem, because management accounting means what? Managing the business affairs. Management accounting means the combination of CA plus MBA. A management accountant has a knowledge of financial accounting as well as the masters of the business administration. एक सीमा मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब यही होता है, आपको अकाउंट्स भी पढ़ना है, फिनेंस भी पढ़ना है, स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग भी पढ़ना है, और उस दैट यू नीड टू स्टडी इन प्रैक्टिकल ओरिएंटेड वे. पढ़ने में पढ़ाने में मजा बहुत आता है. कितने कोर्सेस हम पढ़ाते हैं, कितने सब्जेक्ट डील करते हैं, बट सीमा पढ़ाने का मजा और स्टूडेंट का क्लास अटेंड करने का मजा इज टोटली डिफरेंट देन एनी अदर कोर्स. वेरी वेरी प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कोर्स. When you are having practical understanding, then there is no question that you will be getting jobs and opportunities. But the practical understanding should not be only in the degree or should not be only in the subject studied. When you are sitting on the table, you should be able to give your view, your answer, your solution to the problem. The jobs are there in India, abroad. You can do your due diligence research, do Google, do ChatGPT, do Job Indeed, or CIMA website, CIMA My Job. There are so many options are there. You can search what jobs are available. Generally, the CIMA jobs are at medium managerial level and at higher level. That means the CIMA qualified persons, members, are always treated as very sound and knowledgeable person. Reason being that they are not studying only bookish qualification. They are studying practical oriented business management in the study. In exam, the questions are based on that practical understanding. The questions are not that a company need to raise funds. What are the options? They will give you the balance sheet of the company, the financials of the company, what the competitors are doing. And then you need to say how the funding need to be done. What will be the advantage of debt funding, equity funding, given the scenario of the company. It's all practical based study. When the student do CIMA, their thinking process, their knowledge, their understanding of the practical aspect totally changes. And according to me, as Mr. Manmohan was there in the previous ACCA meeting also, सर सीमा पढ़ने में जो मजा आएगा ना, वो CMA वगैरह कोई भी जगह नहीं आ सकता सर. ये बहुत अलग है, ये बहुत मजा का चीज है. Maybe there are somebody will say that CIMA is giving exemptions and all that. I don't feel that. According to me, the exemptions are not given to attract you. The exemptions are given that you need to study only those things which are relevant in the practical world, so that you can fast pace your study and you can complete the qualification faster. And CIMA in management accounting, the largest body of the world, the oldest body of the world, 110-year-old institute, around more than, I don't remember exactly, 4 lakh members, students. And it's a qualification which is written in all the government jobs, in PSU banks jobs, in RBI guidelines, in state bank guidelines. They have recognized the CIMA as a course which they value. सारी जगह आपको CIMA कोर्स का written वगैरह मिल जाएगा. पहले earlier the CIMA course or any international course, we need to travel outside India to give the exam, stay there.
For the last 15, 20 years, since 2008, the exams are there in India. You don't need to travel or wherever you are. So you can save your money. You can complete the qualification. You will be coming in the largest body of management accountant. There is a community of the management accountant in the world. Regular meetings are held. The PR things of the CIMA Institute. All these things made this course a different altogether as compared to any other course. आप बोलेंगे सर इससे बढ़िया क्या है, वो बाद में आते हैं. पहले सीमा के बारे में बात कर रहे हैं कि CIMA is the largest body of management accountant. The course is a practical blend of a case study, practical problems in every aspect of business that is asked as a question, and you need to answer a practical solution that develop your business understanding. And when you develop that skill, there is no limit for your success. मेरे को ऐसा लगता है मैं 15 सालों में जितना भी ग्रोथ हुआ है मेरे लाइफ में, जितना भी मैंने नॉलेज लिया है, सीमा एक इंपॉर्टेंट पार्ट हेल्प किया है. नॉट ओनली गिविंग एग्जाम but teaching CIMA regularly after every quarter by quarter, doing the case study, understanding an industry, teaching to students, saying about the industry, how the problems can be solved. सोचने समझने का तरीका बहुत अलग हो गया है. कितना ग्रोथ मैंने लाइफ में किया है, कितना बुद्धि आया है, क्या पाया हूं, that is questionable. I am satisfied with whatever I have done, but I am not saying that I am not ambitious. I want to achieve more. But then I am very much satisfied with whatever I have done by learning CIMA, by teaching CIMA, and the students, those who have taken classes for CIMA, they all are fully satisfied, sir. Because it's a goodwill brand. The course is running in 180 countries, 100-year-old course, and very practical oriented, whatever they are teaching, which is in, you can say, Harvard or any highest level of MBA institute, whatever the case study are being taught, that is taught in the CIMA course. It's a very practical oriented course. The value is there in India and everywhere in the world. By doing CIMA, we will be getting what? We will be getting ACMA from CIMA Institute and CGMA from AICPA Institute. Because CIMA and AICPA Institute are working together. They are one entity. From American Institute of Certified Public Accountant, you will be getting Chartered Global Management Account, Gold Standard Management Accounting. And from CIMA, you will be getting ACMA, dual qualification, which will be helping you to move to Canada, US by getting CGMA, and moving to Europe and all that by doing ACMA. If somebody want to move outside India, if you want to be there in India, then the jobs are there in multinational companies and everywhere. You need to do your due diligence. If you find value in the course, if you find opportunities are there, then only you should be doing the course. It's not that I'm saying you will accept, I'm saying you will not accept. Don't ask anybody. You can do research in 30, 40 minutes. What is the value of CIMA? I don't need to say anything. That's, you can say, the first thing, the value of CIMA. As per me, it's a huge value in the market because the knowledge which they are imparting is required in every organization in the world. And you will be able to grow to CEO, CFO level by doing CIMA. The second part, the exams, the cost, the duration, and everything. For that, first of all, go into CIMA course structure. So this is the CIMA course structure. Actually, there are 3 levels written here, but there is one more level which we call CBA level, certificate level. That is not written. Certificate level, operational level, management level, strategic level. In certificate level in CIMA, there are 4 subjects. In operational level, 4 subjects. In management level, 4 subjects. In strategic level, 4 subjects. So if you start from the certificate level, in total 16 subjects are there. Every level there are 4 subjects, like in Indian CA, foundation, intermediate, final. Foundation, there are 4 subjects, intermediate, some 7-8 subjects, final, there are 7-8 subjects. Similarly, in CIMA, at certificate level, not written here, 4 subjects, operational level, 4 subjects, management level, 4 subjects, strategic level, 4 subjects. The subjects name in operational level E1, P1, F1, management level E2, P2, F2, strategic level E3, P3, F3. You understand? E1, E2, E3 are the same thing. Lowest level, medium level, highest level.
management accounting, lowest level, medium level, highest level, financial reporting, financial management, lowest level, minimum level, highest level. And in all the three levels, there is a case study exam. Operational level, operational case study, management level, management case study, strategic level, strategic case study. Presently, for last, I will say 1.5 years, maybe more, the institute is saying that students can study CIMA under a route called FLP route, Finance Leadership Planning route, FLP route, in which the student don't need to give exam for E1, P1, F1, for E2, P2, F2, for E3, P3, F3. They don't need to study these subjects. They don't need to give exam. I will not say not study. They don't need to give exam for these subjects. They need to give exams only for the case study. Operational level, one exam, operational case study. Management level, another exam, management case study. And strategic level, another exam, strategic case study. These subjects, E1, P1, F1, E2, P2, F2 are a technical study. They are saying that you will study technical subjects and no exam. You need to solve assignments on the institute platform for these subjects. The assignment solution is not exam. When you are solving the assignments and suppose it is wrong, you can solve the assignments again. There is no charges, there is no exam fees or anything. So you need to study E1, P1, F1. You solve the assignments, no exam. Just you give exam for operational case study. Once the operational level complete, you go in management level. You complete the assignments for E2, P2, F2. And you give management case study exam only. No exam for these subjects. Only management case study. Complete. Then go in strategic level. E3, P3, F3. Solve the assignments. No exam. And then you give the exam for strategic case study. What is the purpose of this? They are saying that this is technical study. The technical thing, if you understand, basically, it's okay. Whether you can apply that technical thing in the practical world, that is a case study exam. आप technical study कर लिए, आपने अकाउंट्स पढ़ लिया, कॉस्टिंग पढ़ लिया, कुछ भी पढ़ लिया, लेकिन आप प्रैक्टिकल लाइफ में उसको लगा ही नहीं सकते. पढ़ने का क्या फायदा हुआ? व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर स्टडी? जब आपको जिंदगी में काम करना आता ही नहीं, तो आप टेक्निकल किताबी ज्ञान लेकर क्या करोगे? तो भैया बेसिक किताबी ज्ञान लो, लेकिन एग्जाम केवल प्रैक्टिकल ओरिएंटेड जो चीज है उसी का देना है. उससे आपके पैसे भी बच रहे हैं, टाइम भी बच रहा है, और आप कोर्स कंप्लीट करके रेडी. बिकॉज नॉर्मली द एम्प्लॉयर, व्हेनेवर आई मीट विथ एनी एम्प्लॉयर, व्हाट दे आर सेइंग, sir, the student has passed the exam, the student has a degree, but they are not practical. They cannot solve the problem of the organization. सीमा आपको वही सिखा रहा है. बोला भैया हम आपको बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करना सिखाएंगे, उसी का एग्जाम लेंगे. टेक्निकल स्टडी आप थोड़ा बहुत करिए, असाइनमेंट सॉल्व करिए, और आप सीधा सीधी एक केस स्टडी का एग्जाम दीजिए जो प्रैक्टिकल लाइफ में जरूरत होगा. So when you go in FLP route, Finance Leadership Planning route, you just need to give 3 case study exam. And if you are a serious contender, if you are a serious student, ये तीनों case study 1 साल में हो सकता है. Worst to worst 1 साल नहीं है तो 1.5 years, 6 months, 6 months, 6 months. By studying regularly 2 hours. If somebody will say that, sir, I am working professional. आप दिन में 2 घंटा नहीं पढ़ सकते, कोर्स नहीं करना है, नहीं कर सकते. आप एग्जाम ही नहीं दोगे, पास ही नहीं होंगे, क्यों वेस्ट करना है टाइम, पैसे नहीं करने. आप जो भी काम करते हैं 12 hours, 14 hours, you need to study regularly 2 hours. Then do the course. Otherwise not. Simple. If you are here with Saraf Academy, I am giving you guarantee. If you study regularly 2 hours, I will make you pass. Whatever your level of knowledge. Maybe you will say that I studied 5, 7 years back, 10 years back. I have not studied anything. These exams are very, very practical oriented, sir. Relating to all these exams on my YouTube channel, ample of videos are there. 1-2 वीडियो देखिए ना, क्या है, क्वेश्चन कैसा आता है, हाउ टू राइट द आंसर, यू विल अंडरस्टैंड. उसको यहाँ नहीं बता सकते. यू नीड टू गो ऑन YouTube channel Prakash Saraf, see the videos of operational case study management, you will understand what type of question they are asking, how to write the answers, and a very very practical oriented. आपका 2 घंटा हमें चाहिए आपको पास कराने के लिए. ये कोर्स करिकुलम है, ठीक है. अब ये कोर्स करिकुलम में किसको किसको क्या एग्जाम देना है, किसका क्या खर्चा है. इफ यू आर डूइंग सीमा एज अ 10 पास आउट स्टूडेंट, और यू कैन सी 12 पास आउट, एक बार मैं 10 पास आउट की नहीं बात कर रहा, 12 पास आउट. यू आर 12 पास आउट डूइंग ग्रेजुएशन, बीकॉम, बीबीए, व्हाटएवर, ठीक है. They are saying that all the 3 case study exam to be given, assignment need to be solved,
for E1, P1, F1, E2, P2, F2, E3, P3, F3. You solve assignment for E1, P1, F1, you give exam for operational case study. You solve assignment for E2, P2, F2, give exam for management case study, and so on. The exams are only 3. You are an undergraduate, 12 pass out, you are not earning anything. The institute is giving good amount of scholarship. You will say, how scholarship? You will just now come to know after 2 minutes, the fees is very high for those who are graduate. So undergraduate ke liye 1 year will be difficult to complete all the 3 case study. Not impossible. It will be taking approximately 1.5 year, 2 year. For 2 year, institute charges are £1,204 payable in one go. Payable in one go. You can say around 1,20,000 INR. And if you go for the training classes for all the 3 case study, including the basic study of E1, P1, F1, E2, P2, F2, E3, P3, F3, all subjects, I will be taking 92,999. The training classes will be around 1,000 hour. So total cost 1,20,000 plus 92, around 2 lakh to 2,10,000 to do CIMA in 1.5 year to 2 year. ये आपका कॉस्ट है, ड्यूरेशन है 1 to 2 year. If you are 12 pass out, if you are a commerce graduate, BBA, BCom हो गया है आपका, then also you need to give 3 exams. No exemption, all. 3 exams like a 12 pass out. But the institute charges £2,360. And this institute charges is yearly basis. The charges are yearly basis, 1 year charge. So if you complete within 1 year, then it is 2,40,000. I'm considering £1 is equal to 100 rupees. Slightly pound rate is going on higher. If you don't able to complete all the 3 exams in 1 year, then for 1 year, maybe your SCS strategic study left. Institute will charge around 70,000-80,000 more. So your cost will be coming around 3 lakh. But if you are serious contender, I will make you pass all the 3 case study within 1 year. So I have considered 1 year fees, and the training classes fees is same as I said earlier. Here we are offering discount in our fees, that is coming total 3 lakh in place of 3 lakh 30. You can see that for an undergraduate, the total cost is coming around 2 lakh to 2 lakh 10. For a graduate, the total cost for the same thing is coming around 3 lakh. Our fees and all that bundle discount in total 3 lakh. You need to understand why they are charging more from graduates. They are saying graduates are working. You will say, I'm a graduate, I'm not working. Why you are not working? When you are already graduate, you need to work. You need to start earning, man. You cannot be sitting in home and just eating food. That's not allowed. Whether your family require money or not, you need to think about your life. तो जब आप पैसे कमा रहे हो, आपको क्यों स्कॉलरशिप देंगे? भाई स्कॉलरशिप नहीं है. तो total cost will be around 3 lakh and duration is 1 to 2 year. This cost is written 3 lakh assuming 1 year. If you take more than 1 year, it will be coming 3.8 lakh because institute will charging 80,000 more. Okay, be ready with that. Then comes, if you are, say, master's done, or maybe not master's done, but you have 6+ years of experience, either master's or have 6+ years of experience, then you need to give 2 exams. Operational case study, operational level, you don't need to give. Just E2, P2, F2 assignments, MCS, E3, P3, F3 assignments, SCS. Then it can be done easily within 1 year. The cost will be same as earlier, the graduate one. But since it is 2 exams, we will be teaching you less. So our training classes are less. The total with the discount, it is coming 2,80,000. Include without discount, 3,30,000. We are offering discount, which will be coming 2,80,000. And if you are ready to study within 2 hours regularly, I will make you CIMA qualified within 8 months only. Not 1 year is required. It's more than enough for 8 months to complete the course. With the study of basic study, E2, P2, F2 and the case study. I have already taught so many students already cleared. If you want a number of 1 or 2 students, I can share. Not everybody. You can talk with them. You can understand whether it is beneficial or not, whether it is doable or not. Doesn't matter you have not studied for 5-7 years. I'm there. Because the course is very practical. It is not asking bookish study. It is asking practical oriented study. Your technical knowledge is not required, man. Okay. So that cost is coming around 2.8 lakh. Those who are masters or having experience of 6+ years. If you are a CIMA India member, CA member, CIMA India member, you need to give only 1 exam, strategic study. You need to solve assignments of E3, P3, F3 only.
The institute charges again 1 year same. Our training classes is lower because only one exam we need to teach. And with the discount, we are charging 2,69,999, 270. So for CA/CMA, the cost is lowest. If you are a person which is coming in totally different category, means whether you are an MBA, whether you are a BCom, whether you are a CA or not, actually CA, not non-CA, but having good amount of experience, 12 plus years. What qualification you have doesn't matter, but you have experience of 12 plus years. In this category, I have taught in last 2 to 3 years, more than 100 students. Those students also need to give only strategic case study exam. For them, institute charges is very high. Institute charges is 5,50,000, £5,416. Our training classes for one exam is same. So it is totally coming 5,91,000. There is no discount here, sir. Here, the cost is, you will say that why this? Because you understand these persons are generally those who are already working in the organization at a very high level. These persons want to sharpen their knowledge, strategic thinking process. For them, it is like MBA. If you do a master's course from a good university, it will be costing you minimum 15 to 20 lakh. Institute charges, they are charging 1/3 of that only. You can't question why the fees is this, that. Whatever is there is there. I'm not the person. You need to ask CIMA Institute. But for the C-suite person, maybe not have a qualification, but good amount of experience, they can go only for one exam. We need to understand that what is included in any exam is very, very practical oriented things. Those practical aspects give enjoyment to the teacher and give enjoyment to the student. A student will never think for 1 second even in the class or while doing the course कि हम ये चीज बेकाम का पढ़ रहे हैं. मान लीजिए आपने कभी सीए वगैरह पढ़ा, सीए के अंदर आईटी का पेपर होता है, सब लोग रोते हैं. मैं नहीं बोल रहा खराब है, लेकिन सोचते हैं हम लोग रैम ये सब क्या करेंगे पढ़ के. What is the purpose of that? They will never ask questions like that. They will ask what are the types of threats arising in the world relating to IT, relating to artificial intelligence. आज मान लीजिए आपको डेटा पता होगा कि 1 lakh crore or something, the threats have happened in last 1.5 years, 2 years because of artificial intelligence. CIMA will be asking those types of things. In a company, what type of threat can arise, how they can manage. As a person, as a senior person, how can you build your IT team to solve those problems? That type of question they are asking, which is very, very practical oriented, which is not bookish. And once you do that, you are getting knowledge hub, knowledge power, which you can exercise in the practical world to grow your career. For all these fees, whatever the fees are there are 2-3 ways to make the payment to the CIMA Institute, to Saraf Academy. We have entered into an agreement with a finance company around 5-7 days back only. For the CIMA Institute fees and our training fees, all you can go EMI. Without any documentation are required, but without any interest. 0% EMI, 0%. You can make the entire payment in whatever case is happening. Whatever case it is there, you can make the entire payment in 6 months, monthly basis, not beyond that. If you go for more than 6 months, interest will be charged. We can bear the interest cost on your behalf. You will be able to make the entire payment monthly basis. There will be some operational, loan processing charges. You need to share your income proof, your bank statement, your salary receipt, your address ID proof and all that. When your income proof are not there, your parents' income proof on whom you are dependent, then the loan can be arranged for the entire fees. You can pay these all fees in one go. You can pay for 0 EMI, or you can say you can pay to the institute one go. You can pay only our fees EMI basis. You can pay our fees one go. You can pay institute fees EMI basis. All are possible. If you don't have documents, PAN card or all that, any document is missing, the loan provider will not give you loan. We are allowing you to pay all these fees in EMI basis without documentation. But then the fees will be higher. The fees will be higher if you pay to Saraf Academy on monthly basis. You can pay all these fees in one go also. There is no financing required for anybody. You can go for one go also. Somebody will say that, sir, the cost. I just now took a webinar on ACC and IFRS. Similarly, I'm asking to all of you here.
If you do Indian CA or Indian CMA, what is the total cost of doing Indian CA or CMA? I want an answer from everybody in the chat box, please. क्या भाई? Money, Dinesh, others. There are many who are there here. Please involve yourself in the discussion. Then only you will enjoy the discussion, man. Why not sure? सर इंडिया में ही तो रहते हैं ना सर, बाहर तो नहीं रहते यार. थोड़ा तो नॉलेज होना पड़ेगा, खर्चा क्या पड़ता है यार. देखिए मेरे हिसाब से जो मेरे को नॉलेज है, इंडियन सीए इंस्टीट्यूट फाउंडेशन इंटरमीडिएट फाइनल तीनों लेवल का मिला के 80,000 to 1 लाख चार्ज करता है. आप अगर सेल्फ स्टडी करते हो पैसे लगेंगे, साथ में थोड़ा सा स्टडी मटेरियल का 10-15 हजार रुपए, 10 to 15,000 स्टडी मटेरियल चार्जेस हो गए, यानी कि 1 लाख to 1,20,000 टोटल कॉस्ट. लेकिन अगर आप ट्रेनिंग क्लासेस लेते हो तो हर एक सब्जेक्ट का ट्रेनिंग क्लास कम से कम 10,000 तो लगेगा यार. तो फिर खर्चा 2.5 से 3 लाख रुपए हो जाता है. 2.5 to 3 लाख अगर आप एक बार में पास करते हो, वो भी अगर टाइम लगाते हो, बार बार एग्जाम देते हो तो और पैसा बढ़ता है. और सीए करने का एवरेज टाइम 4 से 5 साल है, आपको पता है. यहां पर आपका खर्चा खाली अगर सी सूट वालों को छोड़ दे, किसी भी केस में सीए से ज्यादा नहीं है. कोई बोलेगा सीमा ज्यादा कॉस्टली है, कहां है मेरे भाई? कौन सा कोर्स है जिसका कॉस्ट इससे कम है भाई? मैं ट्रेनिंग क्लासेस के साथ बात कर रहा हूं. इंस्टीट्यूट का खर्चा में मान लीजिए ज्यादा है, ट्रेनिंग क्लासेस का पैसा तो उतना नहीं है ना. इंस्टीट्यूट का पैसा ही ज्यादा है, बिकॉज इंस्टीट्यूट को गवर्नमेंट से कोई सब्सिडी नहीं मिल रहा है. लाइक सीए इंस्टीट्यूट इज गेटिंग सो मेनी सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट, तो उनको वो फीस चार्ज करना पड़ता है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस दे आर पेइंग. आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट डिटेल, वो समझाने का ये समय भी नहीं है. बट इंस्टीट्यूट का चार्जेस और ट्रेनिंग क्लासेस मिलाकर खर्चा वही है जो एक इंडियन कोर्स में लगता है. इट्स नॉट कॉस्टली मैन. और आपको अगर ईएमआई वगैरह चाहिए, हमने सारा अरेंजमेंट कर दिया है. यानी कि आप कोर्स करना चाहते हैं तो आपको पहले देखना है वैल्यू है क्या, अपना ड्यू डिलिजेंस करना है. मेरे हिसाब से मत मानिए. यू फाइंड द वैल्यू इन द कोर्स, यू फाइंड द अपॉर्चुनिटी, यू फाइंड दैट इट विल बी फुलफिलिंग योर ड्रीम, यू फाइंड दैट इट हैज दैट वर्थ, वैल्यू फॉर मनी, देन ओनली यू विल बी गोइंग इन द कोर्स. कॉस्ट क्या है, ड्यूरेशन क्या है, बताया गया. आपको ट्रेनिंग क्लासेस मेरे से लेनी है, किसी और से लेनी है, वो आपको कॉल लेना है. आपको सेल्फ स्टडी करना है, सेल्फ स्टडी इंस्टीट्यूट से कनेक्ट कर लीजिए, पेमेंट कर दीजिए डायरेक्टली, हो गया. सेल्फ स्टडी कर सकते हैं. कोई जबरदस्ती नहीं है कि सराफ एकेडमी के थ्रू आना है. आना है तो हम आपसे कुछ ट्रेनिंग फीस अपना पढ़ाने का लेंगे और इंस्टीट्यूट का पैसा इंस्टीट्यूट को लगना है और हम आपको पास करा देंगे अगर आप रेगुलरली 2 घंटे पढ़ोगे. ये मेरे तरफ से विश्वास है. कभी भी मेरा रिजल्ट 70-80% के नीचे सीमा में नहीं जाता है, चाहे कोई भी बैच हो. When the student is coming, they are ready to give 2 hours regularly. I am giving guarantee I will make them CIMA qualified. भर्ती करके मेरे पास डेटा है, आपको स्टूडेंट का डिटेल दिया जा सकता है, आप कनेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, मेरा वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब पे जाके, कोई भी केस स्टडी का कैसे पढ़ाते हैं, वेदर यू आर अंडरस्टैंडिंग और नॉट, इंग्लिश, हिंदी, व्हाटएवर लैंग्वेज इज देयर, आर यू गेटिंग. देयर आर स्टूडेंट्स फ्रॉम साउथ अफ्रीका, प्योर ब्लैक, हैज टेकन क्लासेस फ्रॉम मी एंड दे पास सीमा. Whether I am teaching in English or Hindi, I always say them, bhai, I use some Hindi language also in the class. Still they are ready. They are ready to join from different parts of the world. Different batches, students are joining with us. Because, as I said, CIMA runs in my blood. खून से निकालेगा सीमा, निकलेगा प्रकाश सराफ से. मालूम नहीं है सर, बहुत मजा आता है पढ़ाने में, पढ़ने में. I take enjoyment in teaching in CIMA. So you can see that if you are interested, you can join. The new batches are starting. सारा batches अलग अलग सब चालू होने वाला है, आप ज्वाइन कर सकते हो. If you feel the worth, अगर आपको लगता है वर्थ नहीं है, नहीं ज्वाइन करना है भाई, आपके ऊपर है. That is my understanding, the CIMA qualification, the CIMA cost, the duration, how Saraf Academy can help you, and what will be the value of this institute. I will be giving my own material, my own analysis, all mock papers, analysis of the mock paper for each student, one by one doubt clearance in the class, teaching everything with a practical aspect. That all thing proof are there in my YouTube channel. You can see that, analyze your comfort and take your call. Last thing, from 10th December, we are going to increase our fees because
all the courses, ACCA, CIMA, CMA, all courses, IFRS, we are increasing our fees from 10th December. This is the fees till 10th December. From 10th December, some changes will be there in our training fees, not CIMA. Around 5% more, because we have to increase the fees to run our organization. We are not able to cover our expenditures. The inflation rate is very high in case of food item and in case of medicines and all that, which are important part. For that reason, the staff are asking more salary and all that. We need to increase the fees by 5%. We increased the fees more than 1 year back. We are again increasing the fees from 10th December. Around 5% of our training classes fees will increase. Now, it's open house. Whatever anybody want to ask, you can unmute yourself and you say your question, I will be replying. Unmute yourself, don't chat. Just unmute yourself and say. Yes, मनमोहन जी बोलिए सर. Yeah, good evening sir. सर इसके एग्जाम्स रिमोट भी होते हैं? लाइक सारे एग्जाम्स सीएमए और सीपीए को छोड़कर घर से बैठकर होते हैं और एग्जाम सेंटर में भी होते हैं. आपकी मर्जी, आप घर पे बैठकर एग्जाम दीजिए. एग्जाम मान लीजिए मैं एग्जाम दे रहा हूँ, घर पे बैठा हूँ, मेरे टेबल पे केवल एक कंप्यूटर होगा और कुछ नहीं होना चाहिए. अलग से कीबोर्ड हो सकता है, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल. 3 घंटा जब मैं एग्जाम दूंगा, मैं स्क्रीन के ऊपर देख रहा हूं, मैं यहां 5 मिनट देखूंगा, एग्जाम कैंसिल हो जाएगा. चोरी फोरी अलाउड नहीं है सर. आप घर से बैठकर इजीली एग्जाम दे सकते हैं. स्टूडेंट लोग 80% घर से बैठकर एग्जाम देते, कहीं ट्रेवल नहीं करना है. कोरोना से चालू हुआ था, अब कंटिन्यू है. कोई भी इंस्टीट्यूट घर से बैठकर एग्जाम बंद नहीं किया है. सो देयर इज नो प्रॉब्लम. रिमोट बेसिस यू कैन सिट एंड गिव द एग्जाम. और अगर आपका मान लीजिए एग्जाम कोई कारण से कंप्लीट नहीं हुआ, आपको फिर से एग्जाम देने मिलेगा विदाउट एनी चार्जेस, जब तक आपका एग्जाम कंप्लीट नहीं होएगा सर. सो दे विल नॉट चार्ज यू टिल द टाइम योर एग्जाम इज नॉट कंप्लीट. एक और क्वेश्चन है सर. पहले मैंने रजिस्ट्रेशन किया था सर किसी कंसल्टेंट के थ्रू, मतलब बाकी हाँ जी. कितना साल पहले? सर अभी 7-8 महीने पहले किया था मैंने. 200 समथिंग दिया था इनिशियल, मतलब बाकी पेमेंट नहीं किया मैंने. सिंपल, मैं समझ गया. मेरे को ये बोलना है, आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास है, राइट सर, ये आपने सीमा इंस्टीट्यूट को पे किया था, वो डिटेल आप हमें मेल डाल दीजिए. ओके. हम सीमा इंस्टीट्यूट से कनेक्ट करके आपका उसी रजिस्ट्रेशन को आगे बढ़ा देंगे, कोई टेंशन नहीं. और सर मैंने सी सूट में लिया था, मतलब उसमें क्या था कि एज ए CFO मेरा 10 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो उन्होंने डिटेल्स वगैरह में आप जाना चाहते हो क्या? राइट, यस सर. आप ये जाना चाहते हो तो 5,4,165,50,000 लगेगा सर, समझ लीजिएगा. राइट सर. तो मान लीजिए आपने 200 पाउंड 20,000 दिया, तो 5,30,000 इंस्टीट्यूट और चार्ज करेगा, चलेगा? राइट सर, यस. तो आपका करा दिया जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए. आप मेरे को खाली डिटेल मेल करिए, सीमा इंस्टीट्यूट से कनेक्ट करके आपका प्रॉब्लम दूर कर दिया जाएगा. और सर जैसे अभी आपने बताया कि फाइनेंस का, सर तो आप करते हैं क्या फाइनेंस इसमें भी? इसमें फाइनेंस करेंगे सर, क्यों नहीं करेंगे. अच्छा, ओके सर. हाँ, सब जगह फाइनेंस चलेगा, लेकिन 6 मंथ 0 EMI है सर. अगर आप 6 मंथ से ज्यादा जाएंगे इंटरेस्ट लगेगा सर, मैं उतना बियर कर सकता हूँ, उससे ज्यादा नहीं सर. तो मतलब सर जैसे अगर टोटल कॉस्ट 591 है डिवाइडेड बाई 6, ठीक है, मान लीजिए 6 लाख बाई 6, 1-1 लाख करके देना है. आपने पहला 1 लाख दिया, मेरे को फाइनेंस कंपनी 5 लाख दे देगा, तो मैं पूरा 6 लाख का 6 लाख इंस्टीट्यूट को पे कर दूंगा. ठीक है, अब जो पे करूंगा मैं इंस्टीट्यूट को, आपको फाइनेंस कंपनी को 5 महीने में 1-1 लाख करके और पे करना है, सिंपल. ओके सर, फिर तो डन सर. और बाकी सर कोई प्रोसीजर है? जैसे जब कंसल्टेंट ने मेरे से पूरे डॉक्यूमेंट लिए थे, जैसे कि भाई कहाँ एक्सपीरियंस है पिछले तो भूल जाइए आप. अभी आपका डॉक्यूमेंटेशन जो हम लोग को जरूरत होगा, जो सीमा को देना है, जो फाइनेंस कंपनी को देना है, वो हम अलग से मांगेंगे सर, हमारे को अलग से चाहिए सर. हाँ ठीक है सर, कैनॉट बी डन सर. हाँ सर, वो मैं अवेलेबल करा दूंगा. और एक और उन्होंने कहा था सर कि नोएडा कहीं पे कोई मतलब 4 दिन की क्लासेस होंगी, वहाँ अटेंड करना पड़ेगा फिजिकल क्लासेस. तो वो नहीं, मैंने कहा था क्योंकि मैं वेस्ट अफ्रीका में हूँ, तो मुझे लगा. नहीं, 1 सेकंड सुनिए. ये वाला जो 5,50,000 ले रहे हैं, सीमा इंस्टीट्यूट की तरफ से क्लासेस होती हैं. इफ यू डू द क्लासेस देन ऑल्सो, इफ यू डोंट डू, ये फीस में क्लासेस इंक्लूडेड है. आप बोलेंगे मैं क्लासेस नहीं करूंगा, ऑनलाइन है तो भी नहीं करते सर. मेरे से स्टूडेंट पढ़ते, उनकी क्लासेस नहीं करते, बिकॉज उनको मेरा पढ़ाने का तरीका बहुत सिंपल लगता है. वहां थोड़ा हाई फाई हो जाता है तो वो करते नहीं है सर. तो आपको नहीं करना है, मत करिए ना सर, पैसे वो कम नहीं करेंगे सर, समझ लीजिए. नहीं राइट सर, मुझे आपकी चाहिए सर, आपकी गाइडेंस तो चाहिए. तो मेरा ये कोई कंपलसरी ना हो. करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, नो कंपल्सन, नो इश्यू. ओके सर, थैंक यू सर. आपने सब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा. इजी कर दिया सर आपने लाइफ हमारी अब. थैंक यू सर. सब कुछ हमने कर दिया है. अब स्टूडेंट को मन, इफ यू फाइंड वैल्यू फॉर मनी,
इफ यू फाइंड सीमा इज द थिंग विच यू शुड बी डूइंग, आई एम देयर इन एवरी कॉर्नर, पढ़ाने से लेकर पैसे से लेकर सब कुछ, और उसके बाद जॉब वगैरह में जो मेरी तरफ से हेल्प होगा मैं करूंगा। लेकिन सिंस आप ऑलरेडी अच्छे लेवल पे हो, मेरे ख्याल से आप मेरे को चाहते ही नहीं हो, आपका अपने आप ही ग्रोथ हो जाएगा, यू डोंट रिक्वायर मी फॉर जॉब्स। थैंक यू सर, थैंक यू। बट सर आपने मुझे हेल्प किया, मैंने आपसे कहा था 1 साल मैंने सीमा का जो क्लासेस ली थी वो काफी हेल्प किया था सर। ठीक है सर, ये उससे ज्यादा हेल्प करेगा। ओके आप सर। इसमें 3 महीना ही पढ़ोगे, लेकिन आप बोलोगे सर 1 साल से ज्यादा समझ में आया 3 महीना। यस बिजनेस सर। को कैसे मैनेज करना सीमा सिखाएगा सर, वो अलग है सर, वो उसको कंपैरिजन नहीं है दूसरे किसी से, यस ऐसा सर। कोर्स है ये सर। ओके सर। और सर अगर हम अभी एडमिशन लेते हैं, रजिस्ट्रेशन हाँ। कराते हैं, तो कब एग्जाम होंगे हमारे नेक्स्ट? देखिए अभी एग्जाम फरवरी में है, फरवरी थोड़ा ओके। जल्दी हो जाएगा। यस सर। वर्स्ट टू वर्स्ट हम लोग मई में एग्जाम देकर क्लियर करेंगे, ओके। फरवरी में हो पाया दे लेंगे, लेकिन लगता है प्रिपरेशन ठीक नहीं हुआ, जिसका चांसेस है तो मई तक मैं करा दूंगा, मई के आगे नहीं जाएगा सर। ओके एग्जाम सर। 4 टाइम्स इन अ ईयर, फरवरी मई अगस्त नवंबर, तो आप ज्वाइन करेंगे, हम एग्जाम आपको मई में दिलवाएंगे, फरवरी में नहीं दिलवाएंगे, मई में खत्म हो जाएगा। 6 महीना में आप पैसा दोगे, 6 महीना में एग्जाम दोगे, फिनिश खत्म। ओके सर। और सर सेम सर 5.5 घंटे का जैसे हमारा टाइमिंग का है, तो क्लासेस आपकी इसकी वीकेंड होंगी? इसकी क्लासेस सर ज्यादातर सैटरडे होती है दोपहर में, अच्छा। सैटरडे 3 बजे। कुछ कुछ ओके। एक्स्ट्रा क्लासेस सुबह भी हो सकती है, लेकिन ज्यादातर क्लासेस सैटरडे सैटरडे सैटरडे। तो मेरे ख्याल से आपके लिए ज्यादा इजी रहेगा, सैटरडे जॉब वगैरह नहीं है, नहीं क्या? नहीं सर, सैटरडे है हमारा वर्किंग, तो इसीलिए मैं कहता लेकिन अगर आपको कोई करना ही पड़ेगा यार, कैसे ओके। ओके सर। सैटरडे ठीक है तीन सर, मैं वो बजे एडजस्ट कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं सर। अगर लाइव कर पाए कर लीजिएगा, एक बार रिक्वेस्ट कर लीजिए कि सैटरडे 3 बजे आपको कुछ क्लास करनी है। यस आप सर। अगर अच्छा काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन मान लेगा यार, थोड़ी ना हर दिन बोल रहा हूँ सैटरडे। राइट सर, राइट सर। यस बिकॉज सर। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आर वेरी वेरी सीनियर, 40 45 ईयर, 50 ईयर, वेरी यस सर। सीनियर पोजीशन। उनको अपने क्लास उस समय दे रहे हैं जब वो फ्री है, अब और कहाँ से लाए सर? और तो दिन पैदा करना होगा साथ के अलावा और ठीक है। ठीक है सर, सॉरी, थैंक यू वेरी मच सर। यहाँ पे ये सीएमए सी सूट जो है, सीएमए का ही वही सेम सर्टिफिकेशन मिलेगा विद द एक्सपीरियंस यू हैव? आई मिस्ड। सीएमए, आप सीएमए यूएस की बात कर रहे हैं, यहाँ सीमा की बात हो रही है सर, समझ में नहीं है। नहीं, सीमा फॉर सी रूट, ये जो है सीमा फॉर सी सूट, हाँ, इसके लिए सेम सीमा सर्टिफिकेशन ही मिलेगा क्या, ये कि अलग है कुछ, मैंने डिग्री में सीमा लिखा हुआ रहेगा? सीएमए सीजीएमए, एसीएमए फ्रॉम सीमा इंस्टीट्यूट, सीजीएमए फ्रॉम एआईसीपीए, वही मिलेगा सर। ओके, जस्ट आपको बिकॉज यू। एग्जाम्स, आपको एक ही एग्जाम क्यों देना है? बोल रहे हैं यार इतने साल का एक्सपीरियंस आपके पास, डेफिनेटली आप 5.5 लाख दे रहे हो, यू आर ऑलरेडी वर्किंग एट सीनियर लेवल, तो आप ये कोर्स क्यों कर रहे हैं? फॉर वैल्यू एडिशन, फॉर गेटिंग मोर नॉलेज। तो आपको एग्जाम्शन देकर अट्रैक्ट नहीं कर रहे, बोल रहे आपका वर्थ वैसा है सर, इसीलिए आपको एक ही एग्जाम देकर जो आप में गैप है उस नॉलेज को पूरा करना है, जिसको आप लाइफ में अप्लाई कर सके। फॉर दैट रीजन दे हैव डिजाइन्ड लाइक दिस। ओके। तो पूरा सेम क्वालिफिकेशन, सेम सर्टिफिकेट, सब कुछ सेम मिलेगा सर, कोई अंतर नहीं है इसमें। और ये सीएमए से बहुत अलग है सर, सीएमए टेक्निकल स्टडी है, ये किताबी स्टडी नहीं है। आपके बैच में अदनान जी कर रहे हैं, सीएमए कर रहे हैं, वो सीमा अभी करके स्ट्रेटेजिक लेवल का एग्जाम देकर आए हैं, उनसे बात करिए, अच्छा लगेगा सर मनोज जी, मजा आएगा। श्योर श्योर, या नहीं मेरा एक्सपीरियंस है, क्वालिफाई हो जाएगा, वही मैं सोच रहा था। नहीं, आपके पास कितने साल का एक्सपीरियंस है? सर 1920 है सर। हाँ तो इजिली है, लेकिन सिर्फ समझ लीजिए आपको थोड़े पैसे बचाने, इफ समबडी वांट्स टू सेव मनी, देन इन दैट केस यू कैन गो इन दिस वन मोर एग्जाम एक्स्ट्रा, लेकिन आपका पैसा सीधा आधा हो जा रहा है सर, 6 लाख के बदले 3 लाख। तो इफ financial issues are there, I will advise those having experience of 12-15 years, go for this route. Then in that case, one exam extra, maybe 3-4 months extra, but the cost is very less. If the financial issues are not there, then go for C-suite route. ऐसा है सर। ओके। और भाई गौरव, मनी, what is the query? Unmute yourself and ask sir. नजमूल, प्राची, प्रसाद, प्रेम। Hi sir, good evening. Yes, संतनु जी, टेल मी। सर ये सी सूट वाला जो प्रोग्राम है, हाँ, इसमें अगर मैं कल को, अगर मान लीजिए आप बोल रहे हैं 6 months, इफ समहाउ समवन फेल्स ऑन दैट, सो हाँ। व्हाट विल बी द नेक्स्ट फीस दैट विल बी चार्ज्ड फॉर अनदर अटेम्प्ट, देखिए हम लोग, एडिशनल अटेम्प्ट? 1 second, 6 months you need to pay EMI from the finance company, ठीक है?
CIMA Institute is saying that you are getting credit for giving exam 2 times. आपने एग्जाम दिया, नहीं हुआ तो आपको दोबारा एग्जाम देने मिलेगा, पैसे नहीं लगेंगे इन ऑल द केसेस। जितना भी मैंने बोला है सब में। अब नॉर्मली मैं बोलता हूं कि 80% रिजल्ट हम एक बार में पास करा रहे हैं। करेक्ट। लीजिए 25 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, 20 एक बार में पास हो जाएंगे सर। अब हम लोग थोड़ी तो गड़बड़ है ना सर हमारे में, हम 5 जन क्यों बने? तो दूसरा बार तो फेल होएगा ही नहीं यार। फिर भी हो गया तो आपको केवल एग्जाम फीस देना है। एग्जाम फीस इज अराउंड 30,000 अराउंड। ओके। 2 बार के बाद भी आपका नहीं हुआ, 30,000 और देना है। अब मेरे को लग रहा है कि आपका क्वेश्चन है कि ये जो पैसा है आप अगर मंथली इंस्टॉलमेंट आप EMI में दे रहे हैं, EMI में ये जो पैसा दे रहे हैं ये तो टोटल सीमा इंस्टीट्यूट के पास जा रहा है, लेकिन EMI वाले को आप 3 इंस्टॉलमेंट के बाद चौथा इंस्टॉलमेंट नहीं दिए तो वो फाइनेंस कंपनी आपके अगेंस्ट में एक्शन लेगा सर। मेरे हाथ में नहीं है, आपके घर भेजेगा वो मेरा सब। क्वेश्चन वो नहीं था, आपने जो पहले आंसर किया वही था एक्चुअली। दैट वाज माय क्वेश्चन। If not for you, anybody, if you fail the exam, then you can give exam again without any charges. But 2 times you are not able to clear, they will charge exam fees. For operational case study around 20,000, for management case study around 25,000, for strategy case study 30,000. ये अलग अलग वो आपको पे करना है 2 बार के बाद तीसरी बार एग्जाम देने के लिए। लेकिन मेरे को लगता है स्टूडेंट 2 बार नहीं देगा ना, कहानी खत्म है सर, वो नहीं कर पाएगा। एग्जैक्टली ऐसा है नहीं सर यहाँ पर। पास करा देंगे, आप मेहनत करोगे हम करा देंगे सर। सो ये क्वेश्चन मेरे को देने में आंसर देने में अच्छा नहीं लग रहा है, सॉरी। नहीं, आई अंडरस्टैंड, थैंक्स। थैंक यू सर। Then somebody was saying, Prem was saying something. Yes, Prem Kumar. Yes, sir. Actually, it means for CA or CMA students, how much time it will take to complete the course, and what will be the validity of your online courses? No, you are talking about CIMA. What will time it take to complete the course? You are talking about CIMA only, na? Yes. Actually, yes. You mentioned right for graduates, it will take 1 year, and means you Your have qualification is what? CMA, sir. CMA India member. Yes, Indian CMA. Yes, Indian CMA member. So CMA India member, the duration is 3 to 6 months, sir, maximum. This is CMA member, only one exam. It will take 3 to 6 months to complete, maybe in February, maybe in May, maximum. That is maximum. Institute charges is this. If you don't want to go for the classes, this is gone. You do self-study, no problem. If you go for the classes, then my charges are extra. Including my classes, this is the fees. But if you don't go for my classes, this is the fees payable to the institute. Classes will be on Saturday or Sunday, sir? Huh? Classes will be on Saturday or Sunday? It will be generally Saturday, but if it is extra class required, it will be on weekday morning 7 a.m. Okay, understood. How many means per day? How many hours will be there? Sir, actually, I am working my One office. class, I will sir, be working on Saturday you also. understand, in this level, there is not a single CA or CMA not working, sir. First of all, clear, sir. हर जन वाक काम कर रहे हैं, तो काम कर रहा है इसीलिए तो क्लास और टाइम पे रख रहे हैं ना। सुबह 7 बजे हर दिन नहीं, कोई एक दिन एक्स्ट्रा मान लीजिए 7 बजे आप क्लास नहीं भी करोगे, रिकॉर्डिंग मिलेगा सर। हर क्लास का रिकॉर्डिंग है, लेकिन कभी कभी एक्स्ट्रा क्लास होती है तो वो सुबह 7 बजे वीक में एक दिन एक्स्ट्रा करना पड़ता है। एक्स्ट्रा क्लास के बारे में नहीं बात करो, मैं सैटरडे का क्लास के बारे में बात करो, कब होगा, मींस कितने घंटे होगा। इट इज फिक्स्ड 3 PM। और उसके अलावा एक्स्ट्रा क्लास अगर होती है एनी डे इन द मॉर्निंग, नॉट संडे 7 AM। लेकिन वीक में कभी भी 2 क्लास से ज्यादा नहीं होगी, 3 कभी नहीं होगी सर जीवन में, मैक्सिमम 2। एंड ऑल आर सपोर्टेड पर डे। हाउ मेनी आवर्स? 3 hours. Saturday class will be 4 hours also, but the morning class will never be greater than 3 hours, 2.5 hours, so that you can go to office. I will leave at 9:30, 9:40 like that. Okay, understood, sir. I will be teaching around 50 to 70 hours, sir, for the case study, and your self-study 50 to 70 hours. So around 120 hour to 150 hour study for giving the exam, passing the exam. Or anybody has any other doubt? Anything to ask? Hello, sir. Yes, sir. Sir, my name Yes. is Gaurav, sir. हाँ। सर मैंने सर MCS SCS कंबाइंड ज्वाइन किया है सर। अच्छा सर मेरे को 2 क्वेश्चंस हैं सर। फर्स्ट इज सर, ये जो कोर्स मटेरियल है सर, हाँ। सर ये कहाँ से मिलेगा सर? नहीं, आपने MCS SCA ज्वाइन किया मेरे पास कि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो? नहीं सर, आपके थ्रू एनरोल किया सर। मेरे थ्रू एनरोल किया, लेकिन मेरे यहाँ क्लासेस भी ज्वाइन की है क्या आपने?
सर मैंने अभी ये थर्सडे कोई आपसे बात किया था वो अभी अभी आप ज्वाइन किए? क्या सर? जो लास्ट माने 3 दिन पहले ज्वाइन किए वो बोल रहे यस हो ना? यस यस सर। आपको मेरा टीम ने जब आप पेमेंट किए एक मेल डाला होगा फ्रॉम स्टडी रिसोर्सेस बोलकर। स्टडी सर। रिसोर्सेस, स्टडी रिसोर्सेस में वो लोग हर गूगल ड्राइव लिंक दिए हैं जहां पर सारा मटेरियल है। आप उस गूगल ड्राइव को सारा डाउनलोड करके मटेरियल सेव कर लीजिए अपना डेस्कटॉप पे। फिर आप मटेरियल मत देखिए, पहले फर्स्ट क्लास का एक बार रिकॉर्डिंग चालू करिए। मान लीजिए एमसीएस और एसीसीए एफआर आईएफआरएस आपको 2 क्लासेस मिली होंगी, आप ध्यान देंगे तो। यस तो सर। पहले आप एमसीएस का 1-2 क्लास करिए रिकॉर्डिंग, आपको समझ में आएगा कौन सा मटेरियल रेफर करना है, कौन सा पढ़ना है, कहां से पढ़ना है। फिर आप मटेरियल रेफर कर पाएंगे। और जहां पर भी आपको क्वेश्चन आएगा आप मेरे को सीधा कॉल करेंगे। मटेरियल वगैरह मेरा टीम नहीं बता पाएगा, आई एम द पर्सन। ओके मेरे सर। ख्याल से जब आपने पेमेंट किया होगा सबसे पहले मेरा मैसेज भी गया होगा कि आप ऐसे Yes, sir. पढ़िए करिए। तो आप मेरे से डायरेक्ट कनेक्ट करिए ना यार, क्यों टेंशन लेना है। ओके You सर। start with the recording of MCS classes, first, second class. You will get to know many things. And then whatever your doubts are there, you connect। और मटेरियल सारा आपको मेल गया है, उस मेल से डाउनलोड करके सेव कर लीजिए। दैट इज इन पीडीएफ फाइल बट इन अ गूगल ड्राइव, बिकॉज बहुत ज्यादा बल्की है ना, तो Yes, इसीलिए sir. उसको गूगल ड्राइव लिंक दिया गया है जहां से आप डाउनलोड करके अपना डेस्कटॉप में सेव कर लीजिए। व्हेन यू डू द क्लासेस देन यू विल अंडरस्टैंड विच मटेरियल टू रेफर। आप सीधा सीधी मटेरियल नहीं देखेंगे, पहले क्लास का रिकॉर्डिंग करिए देन रेफर द मटेरियल, बिकॉज आई से इन द फर्स्ट क्लास विच मटेरियल टू रेफर हाउ। अभी एक बात और है, ये जो बैच अभी अभी एमसीएस का खत्म हुआ था 10 दिन पहले हुआ है, उसका मटेरियल एक गूगल ड्राइव लिंक मैं और बनाऊंगा, जो मैं टारगेट रखा हूं कल बनाने को। कल या परसों आपके पास एक और मेल जाएगा जिसमें करंट बैच का सारा मटेरियल एक साथ रहेगा। जस्ट गिव मी 1 मोर डे, आई विल गिव, यू विल गेट द लिंक ऑफ दैट मटेरियल। सो आपका वो ज्यादा इजी रहेगा रेफर करने में। अभी एक बार रिकॉर्डिंग करिए कल 1-2 क्लास, and then whatever doubts you face you connect with me। I will be giving further material maximum, even though वो लोग दिए हैं बट वो ठीक से स्ट्रक्चर्ड नहीं है। अभी जो बैच खत्म हो उसका मटेरियल आई विल बी गिविंग यू टुमारो और डे आफ्टर टुमारो मैक्सिमम। माय टारगेट इज टू फिनिश टुमारो ओनली। यू विल गेट अ लिंक, विद दैट लिंक यू विल बी एबल टू रेफर ऑल मटेरियल्स इन मच बेटर वे। ओके सर, थैंक यू सो मच कहीं सर। से कुछ खरीदना नहीं है सर, नो पेमेंट। ओके ऑल सर। मटेरियल आर इंक्लूडेड इन द क्लासेस, नो पेमेंट, नथिंग। ओके सर, थैंक यू ठीक सर। है, ओके, थैंक यू सर। यस सर, गौरव अग्रवाल जी कुछ बोलना है? नजमुल, प्राची, प्रसाद, राकेश, संजय, शांतनु, शिव यादव, किसी को भी कुछ बोलना है? एनीथिंग टू आस्क? सर ये क्लास आपका कब स्टार्ट होने वाला है? सर देखिए, जो केस स्टडी की क्लासेस है हाँ। वो चालू होंगी। यहां पर क्या होता है, एग्जाम साल में 4 बार है, फरवरी, मई, अगस्त, नवंबर। ठीक है, मई और अगस्त में जो केस स्टडी मटेरियल इंस्टीट्यूट रिलीज करता है एग्जाम के लिए वो सेम होता है। एंड देन नवंबर और फरवरी सेम होता है। ठीक है, ओके। नवंबर फरवरी सेम केस स्टडी मटेरियल, मई एंड अगस्त सेम केस स्टडी मटेरियल। तो अभी अभी स्ट्रेटेजिक केस स्टडी का एग्जाम लास्ट वीक हुआ है, मतलब ये जो वीक चल रहा है इसी में हुआ है। ठीक है, उसके लिए मैंने 3 महीना लोगों को पढ़ाया था। अब अगर मान लीजिए कोई क्लास ले रहा था वो नहीं एग्जाम दिया, या कोई नए जन मान लीजिए आप आएंगे, तो आप एग्जाम फरवरी में दे सकते हैं। फरवरी के लिए केस स्टडी की क्लासेस अलग से नहीं है, जो क्लासेस हमने कराई उसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। लेकिन फरवरी के लिए कुछ दूसरा बेसिक स्टडी ऑफ E3 P3 F3 क्लासेस चलेंगे, वो आप कर सकते हैं। मान लीजिए आपको फरवरी में रिकॉर्डिंग क्लासेस से मजा नहीं आ रहा है, आपको एग्जाम फरवरी में नहीं देना, तो मैं फरवरी खत्म होते ही मार्च बिगिनिंग से मई के लिए क्लासेस फिर से लगाऊंगा। तो आप मई में एग्जाम देंगे। मैंने जैसे बोला जो भी स्टूडेंट अभी ज्वाइन करेंगे उनको एग्जाम हम मई में दिलवाएंगे, फरवरी में नहीं दिलवाएंगे। फरवरी के लिए हम उनको E3 P3 F3 या E2 P2 F2 या E1 P1 F1 थोड़ा पढ़ाएंगे और वो एग्जाम देंगे मई में। और मई के लिए जो केस स्टडी रिलीज होगा वो अभी है भी नहीं, वो आएगा मार्च महीने में। उसके बेसिस पे हम मार्च अप्रैल मई 3 महीने पढ़ाएंगे और मई में आप एग्जाम दोगे। अभी आपको थोड़ा रिकॉर्डिंग, थोड़ा लाइव क्लासेस मिलेगा। वो क्लासेस जो अभी चलेगा वो चलेगा 10-11 तारीख से, मेरे को शेड्यूल बना हुआ है। दे विल बी रनिंग ऑन Monday morning 7 AM
एंड वेडनेसडे इवनिंग 8 PM वो क्लासेस चलेंगे। वो 100% केस स्टडी का 1-to-1 कोरिलेशन नहीं है, लेकिन उसमें बेसिक स्टडी ऑफ E3, P3, F3 कवर किया जाएगा। ओके, केस स्टडी And sir- बेस्ड क्लासेस अभी करा नहीं सकते सर, केस स्टडी मटेरियल नहीं है। इंस्टीट्यूट अच्छा। रिलीज करेगा मार्च में, उसके बेसिस पे पढ़ाया जाएगा। तो अगर आप और फरवरी ये- में एग्जाम दोगे, रिकॉर्डिंग क्लास मिलेगी। फरवरी में एग्जाम जनरली नहीं देंगे, मई के लिए केस स्टडी क्लासेस अलग से कराई जाएंगी। एंड सर ये आप स्ट्रेटेजिक का ही सिर्फ बोल रहे हो ना, या MCS का भी यही है? सर मैनेजमेंट केस स्टडी का क्लासेस होगा ट्यूसडे इवनिंग और फ्राइडे मॉर्निंग, और फिर ओके। मैनेजमेंट केस स्टडी का मटेरियल भी इंस्टीट्यूट रिलीज करेगा मार्च में। तो मार्च से लाइव ओके। क्लास भी होगी, मई में एग्जाम देंगे। ऑपरेशनल केस स्टडी भी सेम, सब सेम है सर सारा। ओके ओके, ठीक है सर, समझ गए। इतना मैंने क्यों नहीं बोला, बिकॉज अगर मैं बोलूंगा मैं ना, हो सकता है समझ में नहीं आएगा। तो जब स्टूडेंट दिखाएगा इंटरेस्ट है कि मेरे को करना है, तब उसको और डिटेल में बताया जाएगा। सो सिंस यू सोन द इंटरेस्ट, आई हैव सेड मोर डिटेल्ड दैट वे सर। थैंक यू सर। या थैंक यू सर। Sir, I have one question. यस। Actually, sir, I have already communicated with the body and they reviewed my all related documents and they suggested the FLP route for me. हाँ So I need to one thing. So suppose if I subscribe for 1 year and pay the 2,000 money, but I didn't clear fully, and then in that case I need to pay for if I actually expire for 1 year subscription, then what should I do? which is a question by Prem also. Do we have any validity of the classes? First of all, since you are paying to the institute 1 year subscription, Yeah. in 1 year if you are not clearing the exams, I am not going to charge anything sir. मेरे को नहीं चार्ज करना है, लेकिन इंस्टीट्यूट तो आपको 1 साल बाद एग्जाम देने देगा नहीं, बिकॉज आपका ये 1 year का सब्सक्रिप्शन है। So suppose Najmul, you have joined for MCS, SCS, suppose. Then according to me, you need to have a mind frame in your mind, determined that I will complete within 1 year. I will not waste my money. But by chance, suppose you have completed MCS and the SCS is left and 1 year is over, 4 terms are gone. Then institute will charge, as I said in the beginning, around 70 to 80,000. There is a re-registration fee. There is an exam fees. They will charge around 70 to 80,000 to give you exam for strategic case study. So your cost will increase by around 70 to 80,000. But within a year, suppose within a year you have given MCS exam 2 times and still you couldn't clear. Then within the year also, even though annual subscription is given, they will charge for MCS exam fees around 25,000. They are giving in this fees 2 credit for MCS, 2 credit for SCS within 1 year. If 1 year is over, they will charge re-registration exam fees and all that. If 1 year is not over and 2 times exam is given, then they will charge exam fees within the year again. That's the rule of the institute, sir. Okay, sir. One more thing. Actually, if I enroll for the institute in myself, and if I am interested to take your guidance or tuition, so should I allow for tuition only? Sir, we have 50% student join to the institute directly, and they join our classes. Why we will not offer? But there is no discounted fees. The fees will be 68,199. You can see. It is written. So it will be 68,199 until the time you don't pass. Maybe in 1 year you don't able to clear both the exam. You are giving SCS second year. We will not charge any fees, sir. Okay, sir. In that case, sir, in Sunday I have a meeting with the institute one guy. So after that I will try to communicate with you. You are from which country, sir? Yeah, I'm from Bangladesh, but the body from your country, one guy. One second. From Bangladesh, the cost will be 40,000 less. Because in India, there is a GST. 2,000 plus 18%. From Bangladesh, there is no GST. Yeah, they offer the same. So, according to me, if you involve me in your registration with CIMA, it will be better. Whatever your documentation you have shared, you share those documents along with mail to CIMA and CC to us. We will do all the things for you. There is no compulsion to join the classes, sir. Nothing. It's a free service from our side. Reason being that you are taking tension, meeting, fitting. We will arrange all the things for you. No charges, sir.
So if you are interested that we will involve to register you with the CIMA Institute, you just give a mail to CIMA along with CC to us. Ki from now onwards, Saraf Academy will be dealing my matter on behalf of me with the CIMA Institute. You can share all the mails which we have given to CIMA Institute up till now with us, along with CC to CIMA Institute and us. Then it can be done. There is no compulsion on you to join the classes, sir. Okay. If Yeah. you join Okay. classes, very well. If you don't join, then also we will do the needful. You don't need to take tension. Okay. Okay. Fine. I will communicate with you. This is a free service to everybody in the class. If you don't want to join classes, no problem. You have financial issue. You want to do self-study, do, man. We will help you to register with the CIMA Institute. That's our guarantee. We will do everything for you. By taking your documents, by doing changes in whatever documents required, we will guide you and you can be registered with the CIMA Institute without any hassle. Okay. Thank you. Okay. Then तो प्रेम जी, अगर आपको मान लीजिए क्लासेस नहीं करी, आपका रजिस्ट्रेशन का हेल्प हम करेंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। मैंने ये भी बोला है कि आपको ये फीस का फंडिंग चाहिए, वो भी करेंगे सर। हमको किसी भी तरह से सीमा फैमिली को बढ़ाना है। सीमा जो करना चाहते हैं किसी भी तरह से उनको हेल्प करना है। नॉट दैट विद द ट्रेनिंग क्लासेस, with your funding financial issues also, with your registration with the institute also. Full 360-degree support for any student for CIMA, any student, anywhere in the world. Anywhere in the world, for any student, we are ready to help you whatever is possible at our level. और भाई, anything to ask? So we are leaving. Thank you to all of you for joining this session again, because this is very important time, Saturday, 7:30, 8:30. It's either enjoyment time or maybe something else. You are giving your time. Thank you for joining. And whenever you have any doubt in future, we are always there. Me, my team members are always there. When you give a call, if I'm not picking, I will give you a call back, guarantee. My number you all must be having. Still I'm writing 9830176993. This is my number, direct number. You can save, you can connect with me anytime. If I'm taking class, I will not pick up. I'm already doing, so phone numbers are there. I'm not picking, but I will give call back after the session only. I'm always there for all of you because teaching is my passion. And I'm not teaching for money. Obviously, money is there, but that is not my primary purpose. Primary purpose is to help all the students in the world to complete these courses, to grow in their life and to remember me as a genuine person, to help in every respect. That is my objective. Not just giving classes and taking money. That's not my objective. Never was there, never will be there. Obviously, we require money for running our organization. That I understand. We are not doing charity. But the money is not the primary objective. The primary objective is the growth of every student and professional all over the world. Okay? Thank you. Take care. Tada. Bye-bye.